Hello students, good afternoon to all of you. So बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अंडरराइटिंग एंड बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग. इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग को ऑलरेडी मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं. सो बाय द वे बच्चों आज का जो क्वेश्चन है बच्चों दैट इज योर बच्चों रोल ऑफ अंडरराइटर्स. वो क्या है? रोल ऑफ अंडरराइटर इन द कंपनी. तो व्हाट आर द रोल परफॉर्म बाय द अंडरराइटर? ये सभी को तो ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है कि अंडरराइटर का रोल क्या है. बट सो फार एज योर बच्चों एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द रोल, द इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरराइटर इन सब्सक्राइबिंग ऑल द अनसब्सक्राइब्ड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इन ए सिस्टमेटिक मैनर. तो अगर हम देखिए बच्चों की रोल ऑफ अंडरराइटर क्या है तो उसको हमें पूरा एक सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि हम कुछ भी मन से लिख दें. सो ओवरऑली बच्चों हम सभी को मालूम है whenever a company is required to raise finance either from the owner's source or from the borrower's source, he enters into बच्चों issuing shares or debentures. But बच्चों there is a chance of unsubscription, not subscription. That means the amount of the number of securities issued by the company that may or may not be fully subscribed by the shareholders or debenture holders. So in that moment, company will face the risk of बच्चों non-subscription or the risk of बच्चों shortage of funds. That shortage of funds may create an obstacle in the company's बच्चों work. That may also create बच्चों greater risk and that may cause closing down of the company. So in order to avoid such problem of बच्चों unsubscription, company enters into an agreement with the किससे दोस्ती है? एंटर करती है किसके साथ करती है? अंडरराइटर. That's why बच्चों अंडरराइटर enters into an agreement with the company. That agreement is known as underwriting. मालूम है सभी को? The term underwriting refers to giving guarantee, taking the responsibility of buying all those securities, all those shares or debentures which are offered to the public बच्चों for subscription but are not subscribed. So underwriting is the process of बच्चों buying all those securities or मतलब that is बच्चों shares or debentures pledged before the public for subscription in the event of बच्चों non subscription. Clear? And according to SEBI मैंने बताया था आप लोगों को underwriting exactly you are required to learn the definition but according to बच्चों SEBI rule 1993 मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों अंडरराइटिंग इज एन एग्रीमेंट बच्चों विद और विदाउट द कंडीशन टू बाय ऑल द सिक्योरिटी, टू सब्सक्राइब ऑल द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट. बट बच्चों पहले इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और द पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब इन दैट मोमेंट अंडरराइटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग ऑल द सिक्योरिटीज. क्लियर? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ underwriting. And in last class I discussed with you बच्चों the different forms: full underwriting, partial underwriting, joint underwriting, syndicate underwriting, farm underwriting, sub underwriting, and finally I taught you बच्चों outright purchases issue. So these are the different forms of underwriting. And in short बच्चों whatever I was taught you in the previous class, और बच्चों द एंटायर जो पढ़ाया था वो सभी बच्चों आपका फंडामेंटल था ऑफ अंडरराइटिंग. अगर बोला जाए अंडरराइटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स भी उसमें से निकल जाता. एंड बच्चों फॉर्म्स. क्लियर? सो फुल अंडरराइटिंग बच्चों इन व्हिच एन अंडरराइटर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी टू बाय द एंटायर सिक्योरिटीज, एंटायर शेयर और डिबेंचर व्हिच आर प्लेस्ड बिफोर द पब्लिक इन द इवेंट ऑफ बच्चों नॉन सब्सक्रिप्शन. And the second sentence you can write बच्चों here the liability, here the risk of the underwriter is the full amount of unsubscribed securities pledged before the public. Then the second form of underwriting which is known as बच्चों आपका partial underwriting. Here the underwriters enter into an agreement with the company but to subscribe the unsubscribed securities, debenture or shares, but बच्चों एक certain portion of the securities
not the full person. So partial underwriting is a type of underwriting in which the underwriter undertakes to bear, undertakes to buy, undertakes to subscribe a certain portion of the unsubscribed securities instead of the full amount of securities, full shares or debentures. That's why in the partial underwriting, the liability, the risk of the underwriter is restricted बच्चों up to the number of securities, number of shares or debentures बच्चों he has undertaken. Well, but it is restricted up to the amount of liability he has already undertaken, not he is liable for full. Then बच्चों third point, joint underwriting. In case of large company involving in issuing large number of shares or debentures having large amount, where the greater risk is involved in case of unsubscription. In that moment, no one underwriter but not a single underwriter is ready to bear the risk of the company. In that situation, company is required to enter into an agreement with number of underwriter and who jointly undertake and jointly gives guarantee or take the responsibility of subscribing the securities which are placed before the public in the event of non-subscription. So that's the difference between the previous underwriting, full and partial, and the joint underwriting. So whenever any undertaking is undertaken by more than one underwriter, that is known as joint underwriting. But here the company enters into an agreement with the more than underwriters. Clear? Then the similar point with the related to your joint underwriting is syndicate underwriting, whereby the number of underwriters enters into an agreement among themselves to take the risk of unsubscribed securities. समझ में आया? So the difference between joint and syndicate is that in joint underwriting, firms enters into an agreement with number of underwriters to reduce its risk in the event of non-subscription. But syndicate underwriting में firm, a number of underwriting firms enters into an agreement among themselves to take the advantage of larger issue of shares. तो एक कंपनी का बहुत शेयर इश्यू हो रहा है, तो उससे अपने आप को बेनिफिट पाने के लिए ये लोग खुद अपने आप में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं. देन फार्म अंडरराइटिंग वेरी सिंपल बच्चों, जैसे कि पार्शियल था, इट इज सिमिलर टू पार्शियल, whereas in partial underwriting, a farm, the underwriting farm is liable for a certain portion of the securities. Here he is liable by enters into an agreement to buy a certain number of shares, not certain portion, certain number of shares. कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके 10,000 शेयर्स खरीदूंगा. That means I am responsible for buying only 10,000 shares. Clear? So that is farm underwriting. Then बच्चों sub underwriting. So it is another form of बच्चों underwriting in which the liability of the बच्चों unsubscribed portion of the share, the liability of the unsubscribed portion of share is borne by the underwriter. But at the same time, he enters into an agreement with other underwriter. But the important fact is that, bachcho, there is no knowledge of the sub underwriter with the company. Here, the main and the final agreement is done between the underwriter and the firm. But there is no bachcho agreement, there is no bachcho contact between the sub underwriter and the firm. So here the liability of the bachcho underwriter, he shared himself with his sub underwriters to subscribe all the shares or debentures which are placed before the public in the event of unsubscription. And the last form of your underwriting, that is your outright purchases issue. So in case of outright purchase issue, here he enters into an agreement with the firm where he agreed to buy and subscribe himself the
shares or debentures which are placed before the public in the event of non-subscription, rather than he doesn't involve in any giving guarantee. The difference is that बच्चों in all the previous forms of underwriting, he underwrites to subscribe all the unsubscribed debentures or shares on a commission basis. But here he enters into an agreement with the company to buy itself the entire bunch of shares or debentures which are not subscribed by the public. But remember, when the existing shareholders do not subscribe, when the public do not subscribe, in that moment I will give you guarantee, but in outright purchase issue there is no guarantee. But here he itself purchase buy the entire bunch of share or debenture which are not subscribed. But after the existing shareholders and the public not subscribe, but he has the right butcher to sell all the security that he has bought to the public later on. So these are the various forms of underwriting. Now the question is that butcher, what are the roles of the underwriter? What are the roles of the underwriter? 2 minutes wait करो. Okay बच्चों, so today's question है बच्चा आपका role of अंडरराइटिंग. सो बच्चों रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ अगर अंडरराइटिंग बोला जाए बच्चों तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे कि आपका पहली बात तो सभी को मालूम है, अगर कंपनी के शेयर्स बच्चों सब्सक्राइब नहीं होते तो उसके लिए अंडरराइटर जिम्मेदारी लेगा. सो उसका क्या क्या रोल है? फर्स्ट पॉइंट बच्चों एडिक्वेट फाइनेंस का एश्योरेंस देगा. एश्योरेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस कि आपको जितना रिक्वायर्ड फाइनेंस चाहिए वो आपको मैं दिलाऊंगा. अगर कोई भी सिक्योरिटीज परचेज नहीं होती तो मैं उसको लाके खुद परचेज करूंगा या खुद सब्सक्राइब करूंगा. तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों एश्योरेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस. देन बच्चों सप्लाइंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज. सप्लाइंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज. देन बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज. जो सिक्योरिटी कोई नहीं खरीदता, मैं खरीदता हूं तो बाद में उसको मैं क्या करूंगा? खुद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो एश्योरेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस या एश्योरेंस ऑफ बच्चों सब्सक्राइबिंग ऑल द सिक्योरिटीज बोल सकते हो. प्रोवाइडिंग बच्चों वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज, बताऊंगा व्हाट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है. थर्ड पॉइंट बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज. फोर्थ पॉइंट बच्चों इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी. डेफिनेटली अगर जदि मु काली कहूदी ना यदि आशीष रो 100 कोटी रो रिस्क मु नउची तो डेफिनेटली लोक मान को मन रे कोन आसीबो? तो डेफिनेटली आशीष गुटे भलो लोक थिबो कि भलो कंपनी थिबो, बडा तार गुडविल थिबो. अदरवाइज सार इक्विटी 100 करोड़ रो तार केबे रिस्क नेबे नाही. सो मोर अंडरटेकिंग द्वारा तार कोन हिजो चिंता करूना पिलाने. जदि सपोज मो पिट्रे आसी वर्तमान विराट कोहली बा धोनी आसी पिट्रे हाथे दी ये पिलाटा बेस्ट तो मो गुडविल बढ़िबो ना नहीं. तो लोक डेफिनेटली भाबे सेते बड लोकटा का पिट्रे हाथ दोची मा निहाती यार भी इंपोर्टेंस बहुत थिबो. सही जिंस ट्रांसफर हिजो समझ में आके. गुडविल कैन बी वैल्यूएबल ओनली व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू पढ़ी ना पढ़ी ना. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट कहली एश्योरेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस. सेकंड पॉइंट कहली प्लान सप्लाइंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कंपनी. थर्ड पॉइंट में आपको क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स और डिबेंचर्स. फोर्थ पॉइंट क्या बोला बच्चों? इंक्रीज इन द गुडविल. इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी. देन बच्चों सर्विस टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. सर्विस टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. एंड लास्ट बच्चों सर्विस टू द सोसाइटी. सर्विस टू द सोसाइटी. बच्चों सिंपली जाने को बस सर्विस टू द सोसाइटी कैसे हुआ? अगर कंपनी नहीं बनेगी तो सोसाइटी को सर्विस कैसे मिलेगी? अगर आज जियो कंपनी नहीं होता था इंडिया में 1-1.5 साल तक लोग तो मोबाइल पहले फ्री में नहीं मिलता. जो मोबाइल सर्विस इंटरनेट सर्विस फ्री में नहीं मिलता. एंड आज की डेट में बच्चों वही 1 GB नेट तुम एयरटेल से 280-290 में खरीदते. जबकि आज बच्चों अगर तुम लोग वही 280 तो खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर 299 से खर्च करना पड़ेगा तो 28 डेज का तुमको पर डे 1 GB नेट मिल जाएगा या 1.5 GB नेट मिलेगा पर डे 199 में. पहले वही 289 का मैं खुद रिचार्ज करता था बच्चों. फिर पावर कार्ड डालना पड़ता था, मेन रिचार्ज करना पड़ता था, नेट कार्ड डालना पड़ता था. तो अगर सोचा जाए तो बच्चों लगभग वही 400-500 खर्च करके हमें 1 मंथ मिलता था. 1 मंथ में 1 GB नेट. उस 1 GB नेट को हम पूरा महीना
यूज करते थे। 1 GB नेट को पूरा महीना यूज करते थे। अगर मैं आज बोलूं बच्चों कि मैं पर डे आपको ऑनलाइन क्लासेस में लगभग 22 GB, अब थोड़ा कम हो गया है, 22 GB खर्च करता हूं नेट, तो मैं कंगाल हो जाता। मैं कभी भी सपने में नहीं सोचता कि मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, ऑनलाइन क्लास करूंगा। अगर यहाँ पे आज इंडिया में जियो कंपनी ने, मैं जियो का फैन नहीं हूं, मैं एयरटेल यूज कर रहा हूं, अभी भी मेरा एयरटेल चल रहा है, समझ में आया कि नहीं? बट अब सोचना मत जियो का फैन हो गया बच्चों, एयरटेल ही मेरा चल रहा है अभी भी। बट अगर जियो कंपनी यहाँ पे लॉन्च नहीं करती, जियो भी मेरा है, दोनों है, बट बच्चों का नहीं करती, तो आज मुझे एक क्लास के लिए 2 GB 3 GB का नेट डाउनलोड सोचो करना पड़ता, और मैं उसके लिए कभी भी आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू रेगुलर क्लासेस, नहीं दे पाता क्या, नहीं दे पाता। सो थैंक्स टू द जियो, उसकी वजह सारी कंपनी ने इंडिया में क्या किया, अपना टैरिफ को डाउन किया। सो बच्चों दैट्स अ सर्विस टू द सोसाइटी। कंपनी एस्टैब्लिश होगी तो सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। कंपनी एस्टैब्लिश होने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, वो फंड्स तो पब्लिक से ही आएगा, आइदर शेयर से हो आइदर और डिवेंचर से हो। सो पहला पॉइंट बच्चों मैंने आपको क्या बोला, एश्योरेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। सेकंड पॉइंट आपको बोला क्या, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। थर्ड पॉइंट बोला बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ पॉइंट बोला बच्चों इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी। फिफ्थ पॉइंट बोला सर्विस टू द बच्चों प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। So these are the role, only 6 points है, ज्यादा नहीं है, roles of बच्चों underwriter। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों assurance of adequate बच्चों finance, सभी को मालूम है बच्चों adequate finance। So बच्चों underwriting is an act of बच्चों undertaking the responsibility और बच्चों buying by the underwriter to buy and subscribe बच्चों all the shares or debentures pledged before the public in the event of unsubscription। So he gives you, माने अंडरराइटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सब्सक्राइबिंग बच्चों ऑल द सिक्योरिटीज व्हिच आर नॉट सब्सक्राइब्ड। दैट मींस ही गिव्स द गारंटी ऑफ बच्चों योर फुल सब्सक्रिप्शन। ही गिव्स द गारंटी ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन मींस एडिक्वेट फाइनेंस। फुल सब्सक्रिप्शन नहीं होने से पैसा मिलेगा नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट द इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द अंडरराइटर इज द एडिक्वेट बच्चों फाइनेंस पाने के लिए, तुमको दिलवाने के लिए वो क्या देता है, गारंटी देता है। सेकंड बच्चों प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, सप्लाइंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बच्चों, व्हाट आर द रिस्पॉन्ड ऑफ द इन्वेस्टर्स, shareholders, debenture holder, banks, financial company, for the company, whether they are ready to बच्चों buy the securities of the company, whether you have a goodwill or not, that information also बच्चों given by the underwriter to the firm, कि आप लोगों को दुनिया सोचती क्या है। Being a बच्चों underwriter is a person who take the entire responsibility, तो वो पहले कंपनी को भी सिखाएगा कि देखो आपका रेपुटेशन मार्केट में तो ये है, आपकी इतनी बड़ी शेयर की रिस्क में कैसे ले सकता हूं, अगर ले लिया तो अगर डूब गया तो लोग तो आपको पसंद नहीं करते, तो डेफिनेटली आपका जितना शेयर इशू करोगे 10-20% ही परचेस करेंगे, तो बाकी 80% तो मैं लायबल हो जाऊंगा। तो इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकता। आप अपने आप को थोड़ा जिम्मेदार बनाओ और 1-2 साल मार्केट में गुड कंडीशंस क्रिएट करो, उतने बजट में काम करो, देन आफ्टर मैं आपको क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। आप बोलो सर आप इतने लोगों को देते हो, फंड्स देते हो, हमें थोड़ा थोड़ा दे रेडी हूं, आपको भी दूंगा, चलो 1-2 लाख रुपए दे देना, 5 लाख दे सकता हूं। अब आप 50 करोड़ बोलोगे तो ये देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, द पब्लिक रेस्पॉन्स फॉर यू एंड योर कंपनी इज नॉट गुड। बेटर तो बोल ही ना, बेस्ट तो बोल ही, गुड ही नहीं है, पहले गुड देन बेटर देन बेस्ट, तो गुड ही नहीं है। सो द सेकंड पॉइंट बच्चे, इन एडिशन टू दी providing protection from all the unsubscribed shares or debenture, in addition to the providing the protection from all the unsubscribed shares or debenture, the second बच्चों role played by the underwriter is to provide valuable information to the company about the response of the investors, debenture holders, shares अबाउट दी कंपनी। वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं बच्चों, उनकी क्या फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, व्हाट इज योर मार्केट रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द एक्चुअली कंडीशन, यू थिंक आई एम इन अ बेस्ट पोजीशन
but what people think about you. But thinking is not बच्चों related to your brain. Why people are not voluntarily come forward to invest their savings into your company? Because they do not feel it is safe to invest in your company. Because they do not get, बच्चों previously they whatever the amount they invested in your company, they do not get the required interest, required dividend and time return उनको मिला नहीं. That's why their response towards you is बच्चों very least rather than other A, B, C, D companies. So you will get the information. So if you get the information about your position, definitely you will try to improve yourself. Okay? बुझिला ना नहीं तो निजु कौन करिवो एबे सब इंग्लिश रे बुझाउ चेष्टा करो तो फाइनल ईयर हेलोनी हो ना नहीं अब खाली ओडिया रे कहले पण ट्रांसलेट तो इंग्लिश रे करिवो ना समझ नहीं आ रहा क्या तो अगर तुमको मालूम पड़ा कि हमारा रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं है लोग हमें चाहते भी नहीं है हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से सेफ फील नहीं करते क्योंकि हमने लास्ट टाइम किसी को टाइमली रिटर्न नहीं दिया देखो बच्चों तुमको सब बड़े प्रश्न रुके टाइमली पेमेंट दवा विल क्रिएट योर गुडविल टाइमली बच्चों इलेक्ट्रिक बिल दवा टेलीफोन बिल दवा रेंट दवा पेमेंट दवा इट विल क्रिएट बच्चों गुड लॉयल्टी पॉइंट क्रिएट करे ना नहीं तो दैट विल गिव यू एन आइडेंटिटी ऑफ बच्चों एफिशिएंसी जने पेमेंट 1 तारीख करिवो कि 10 तारीख करिवो व्हाट इज द डिफरेंस कौन डिफरेंस किसी नहीं 1 तारीख पेमेंट आई पेमेंट 10 तारीख पेमेंट आई बट 1 तारीख करिवाटा पेमेंट आ बच्चा दैट विल इंडिकेट योर एफिशिएंसी दैट हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट योर लायबिलिटी एंड 10 तारीख पेमेंट सब काम करी 10 तारीख पेमेंट कर दैट मीन तुमको लॉयल्टी पॉइंट कम कर दोछि कहउछ नहीं पेमेंट जीव ही जीव तो स्कूल रे पिला पाठ पढुछ पेमेंट दबो ना नहीं कि लेट दे दोछ लेट देने से तुम्हारा उस स्कूल के प्रति क्या रहता है लायबिलिटी नहीं एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिल जाएगा अगर तुम्हारा पेमेंट तुम्हारे बच्चों पेमेंट पूरा परफेक्ट 1 तारीख होगा तो दैट स्कूल कौन कर भाई इसके पेरेंट्स एंड ये बच्चा पूरा डिसिप्लिन है चिंता करो ठीक हो जाए तो दैट विल क्रिएट ए गुड रिस्पॉन्ड क्या और हमेशा तुम्हारे घर में नोटिस आता होगा उसके बाद करोगे दैट विल क्रिएट बैड रिस्पॉन्ड हो जाए नहीं तो पर्सनली चिंता करो सो तुमको जब तुमको पब्लिक को देना होगा डिविडेंड या इंटरेस्ट बच्चों तुम अगर टाइमली देते हो उनको सो दैट विल गिव यू ए गुड मार्केट इमेज सो व्हाट इज योर आइडेंटिटी इन द मार्केट बच्चों दिस इंफॉर्मेशन आल्सो गिवन बाय द अंडरराइटर व्हाट आर द जनरल रिस्पांस ऑफ द इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स यू उनका तुम्हारे लिए क्या सोच है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बच्चों सिक्योरिटीज आफ्टर बाइंग द सिक्योरिटीज आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज या आफ्टर सब्सक्राइबिंग which securities unsubscribed securities the next important role played by the underwriter बच्चों क्या है बोलो is to distribute the बच्चों securities to the real investors वो तो इन्वेस्टर नहीं है ना he just undertake the responsibility of subscribing and giving you full financial support but कब तक मैं रख पाऊंगा इसको तुम लोग मालूम है शेयर बच्चों once a shareholder invest their money into the company he cannot withdraw back the money unless otherwise the company is liquidated पर प्रेफरेंस से न हो जाएगा कि यदि इक्विटी शेयर मु किनिची माने मु तो गोटे अंडरराइटर लाइक ब्रोकर बा एजेंट वाला गोटे लोक तो सारा जीवन तो मु तो उससे बांधे के रही मोर तो से काम न ना आई एम नॉट द शेयर होल्डर अछि कि मु केवल शेयर सब्सक्राइब करे में हेल्प करू So my next job is to distribute the security, is to sell the security to the distribute sell नहीं करवा दूंगा and तुम मुझे मेरा पैसा दे दो कौन दे देगा मेरा पैसा कंपनी दे देगी to the real investor किसको real है नहीं so it is possible through an agent मेरे large number of agents होंगे मेरे large number of बच्चों associates धरी मेरे employees होंगे who will help me उनको भी पैसा मैं पेमेंट करूंगा नहीं करूंगा क्या खत्म so the next point बच्चों distribution of securities assurance of adequate finance second point बच्चों supplying of valuable information third point बच्चों distribution of securities which are bought by the underwriter to subscribe all the unsubscribed securities but later on he is required to sell these securities to the real investors next बच्चों increase in goodwill बच्चों अंडरराइटिंग ऑफ कैपिटल तुम्हारे कैपिटल को अंडरराइट करूंगा तुम्हारे पैसे को सब्सक्राइब करवाऊंगा अंडरराइटिंग ऑफ कैपिटल बच्चों बाय द अंडरराइटर
definitely बच्चों improves the goodwill of the company, image of the company. If a particular underwriting firm gives guarantee to the body corporate to subscribe his unsubscribed security, that means बच्चों it will definitely catch the public response. If public see that there is someone who is ready to buy all the unsubscribed securities later on if we do not subscribe, that means definitely there is something. है कि इसके अंदर बहुत कुछ है that's why but he is agreed to buy securities. So definitely हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. तो बच्चों जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस पढ़ोगे वहां पे तुम्हें सब मालूम पड़ेगा ये कंपनी कितना शेयर इशू करी, इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या, यहाँ पे अंडरराइटर कौन कौन है, इस कंपनी के लिए कौन कौन अंडर एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इतने बड़े बैंक को अंडरराइटिंग दे रहे हैं. तो डेफिनेटली हमारा पैसा वहां पे क्या सुरक्षित होगा. सो इंक्रीजिंग गुडविल होगा ना नहीं मुझे बच्चों. दिस इज द वे ऑफ इंप्रूविंग द मनी. अर्निंग मनी बढ़ाने का तरीका, जैसे तुम दुकान खोलते हो, जॉब करते हो, इससे भी बच्चों अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, हम अगर अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बच्चों, तो उससे हमारा पैसा ही बढ़ता है. इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर मनी एट बच्चों बैंक में जो थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर फार्म में लगाते हैं तो फार्म उस कंपनी में लगाते हैं तो कंपनी से बिजनेस करेगी और बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा सबको इक्वली प्रोपोर्शनेटली बांट देगी. इक्वली मतलब प्रॉपर, जिसने जितना इन्वेस्ट किया उतना उसको उतना मिलेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों समझ में आया तो गुडविल बढ़ेगा. देन बच्चों सर्विस टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स. बच्चों प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कौन है, दोज हु आर ऑलवेज रेडी टू वॉलंटरी एग्री टू बच्चों इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इनटू द कंपनी. हाँ, बट दीस टाइप्स ऑफ बायर, तुम लोग तो अभी कहीं भी इन्वेस्ट कर दोगे अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहोगे अगर एक बार, पर तुमको नॉलेज है क्या. पर दोज हु आर बच्चों प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जो लोग सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग, तो उनका बैठे बैठे पैसा कमाने का एम है. पैसा है, पैसे कहां करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में. सो दे डेफिनेटली रिक्वायर द अंडरराइटर. उनको क्या चाहिए, अंडरराइटर चाहिए. वो ढूंढेंगे अंडरराइटर ही उनको राइट इंफॉर्मेशन देगा. इनफैक्ट दे विजिट अंडरराइटर, भैया बताओ तो सिर्फ उस कंपनी का बारे में मुझे बताओ, वो तो अच्छा बोल रही है अपने आप को और आपने उसका गारंटी भी लिया. आपने क्यों गारंटी लिया, तो आपने गारंटी लिया है तो हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन दो. So it also provides the services to the बच्चों prospective buyers. हाँ, the मतलब I will take an advice from the underwriter whether to invest or not. हाँ, the type of security we will purchase, हम कहाँ खरीदे बोलो. आप तो 10 कंपनी के अंडरराइटर है, बताओ 10 कंपनी में से हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, तो अंडरराइटर से बताएगा. समझ में आया कि नहीं. सो अंडरराइटर आल्सो प्रोवाइड्स द सर्विसेज बच्चों दे सकता है टू दी प्रोस्पेक्टिव बायर्स. ओके, देन सर्विस टू दी बच्चों सोसाइटी. यू नो बच्चों द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या द कमेंसमेंट ऑफ बच्चों बिजनेस इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए बच्चों भी रिक्वायर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए बच्चों रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस. हाँ, that the economic development of a country depends upon its बच्चे industry, commerce पे depend करता है and the development of commerce and industry in the country बच्चे requires huge finance. हाँ या नहीं. And huge finance can be raised through the successful issue of shares. If the shares are not successfully issued, that means the amount of authorized capital, issued capital if issued to the public are not successfully issued, that means company doesn't able to raise finance, नहीं कर सकती. And if company doesn't able to raise finance, company does not start its activities and provide service to the society, quality goods at a low price, quality services at a low price. ये कैसे पॉसिबल है, सोचो कैसे पॉसिबल है. बच्चा वेरी सिंपल सी बात है. मैंने आईफोन खरीदा है, आईफोन खराब होगा, मैं यहाँ क्वेंजर में दुकान में दिखाने जाऊंगा रिपेयर करने, तुम लोग सब क्यों नहीं देख सकते अच्छे अच्छे हैं, बेकार बात है. बच्चों गलत कर देंगे ये लोग. आप लोग नॉर्मल फोन भी खरीदो, नया फोन भी यहाँ दिखाओ, बच्चों खराब कर देंगे. हम अपनी बाइक खरीदते हैं हम लोग, तो बच्चों डेफिनेटली अगर आप एक बार एक बाइक भी खरीदते हैं बस इनिशियली हम लोग शोरूम लेके जाते हैं, कहीं लेते हैं बाहर, कोई ठीक से नहीं करेगा, इनफैक्ट ज्यादा पैसा भी लेता है फिर भी वहीं जाते हैं. तो सोच भी हमारी वैसी होती है बच्चों.
बाहर जाने से वो डुप्लीकेट पार्ट्स लगाएगा, ठीक से काम करेगा, हम किसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों वही चीज है सर्विस टू द सोसाइटी में, वही पॉइंट्स आता है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? कंपनी देखो, हम लोग सपोज एक एलजी का एसी खरीदा, तो एसी को रिपेयर करने वाला हमारे लोकल मार्केट में कोई होगा? वही कंपनी का ही टेक्नीशियन होगा जो प्रॉपर्ली उसको क्या करेगा? 10 ईयर्स का गारंटी वारंटी दे रही है, तो कंपनी वहां पे टेक्नीशियन भेज रही है, तो वो टेक्नीशियन देखेगा, देखना खराब भी होगा तो वो ठीक रिपेयर करके जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। आउटसाइडर को दोगे बच्चों, वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, वो पूरा ही बेटा खराब कर देगा, नहीं कर देगा। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा कब पॉसिबल होगा? ओनली व्हेन कंपनी कैन सक्सेसफुली बच्चों कंप्लीट इट्स इशू ऑफ शेयर, माने डिवेंचर्स, शेयर जो भी हो, सिक्योरिटी मतलब कैपिटल जब कंपनी को मिलेगा तभी जाके कंपनी अपना काम कर पाएगी, न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर पाएगी, ओल्ड प्रोजेक्ट को रिनोवेट कर पाएगी, मॉडर्नाइज कर पाएगी, आपका न्यू प्लांट मशीनरी परचेस कर पाएगी, ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस कर पाएगी, प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट कर पाएगी, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट कर पाएगी, कोई एडिशन कर पाएगी, बच्चों कुछ भी कर पाएगी। Then company can able to provide quality goods, quality services at a low price in society, which is possible only when a company is able to successfully बच्चों issue its बच्चों shares or debentures. So service to the society बच्चों is possible only when underwriter gives you an assurance to the company to subscribe its all shares or debentures, which are not subscribed in the event of non-subscription. Then a company can build, start its work and provide service to the society. So the role of the underwriter is to enable the company to start its activity, to start its project through giving an assurance of successfully issuing shares or debentures by which a company will be able to start and provide service to the society. So ultimately underwriter gives service to the society through the company because it enables the company to start, to build, to establish. So its impact, its benefit goes to society. So he also provides service to the society. Clear बच्चों? So these are the important role played by an underwriter towards giving assurance to the company, providing valuable information about the company, about the general response of the people, investors towards the company. है नहीं? उसके बाद क्या बोला था मैं? आपका distribution of securities, building of goodwill, providing information to the prospective buyers या service to the prospective buyers, and finally बच्चों बोला मैंने आप लोगों को क्या बोला? सर्विस टू दी सोसाइटी। बट अंडरराइटर सोसाइटी का सर्विस डायरेक्ट देता नहीं, इनडायरेक्ट वे में देता है। समझ में? अगर मैं एक बच्चे को बना के उसे अगर सीए बनाता हूं तो डेफिनेटली वो कंपनी को सर्व करेगा। तो कंपनी को सर्व करने में सीए लेक्चरर्स का, सीए टीचर्स का रोल है कि नहीं है? इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में बोल सकते हो। So this is all about बच्चों your underwriting forms, उसका जो भी introduction part, then your role of underwriting. Hope सभी बच्चे को समझ में आया। If any doubt in respect of any point बच्चों, I will again discuss with you in your next class. तब तक पढ़ें, अगर किसी को कुछ भी डाउट रहा तो मुझे पूछें, क्लास के बाद कॉल करें, अगर फ्री ना हुआ तो फिर मुझे दोबारा कॉल करें। I will clear your doubts. अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।